Today I'll be taking lecture 2 related to Introduction to Marketing, and it will include nature, scope and importance. आज मैं लेक्चर 2 में नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग की बात करूंगी। चलिए देखते हैं लेक्चर में आगे क्या है। Nature of marketing. If we talk about nature of marketing, the first point is focus on customer service. मार्केटिंग हमेशा फोकस रखता है कस्टमर एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस पे। It makes sure that the customer service is excellent and the customer feels delighted when he or she receives the customer service. So कस्टमर सर्विस का फोकस अगर देखा जाए तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से ड्रॉ होता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो आज भी वैलिड है, आज भी जिसकी एप्लीकेबिलिटी है, दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कंसंट्रेटिंग और फोकसिंग ऑन द कस्टमर सर्विस. So if the marketer provides the best of services to the customer feel very happy, and it is very likely that the customer will come back and buy the product again and again. अगर कस्टमर सर्विस बहुत अच्छे से हम देते हैं तो ये बहुत तो हो सकता है कि कस्टमर वापस आपका प्रोडक्ट बार बार खरीदे। मार्केटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन वाइड फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग आइसोलेशन में काम नहीं करता। मार्केटिंग इनफैक्ट इज द होल बिजनेस। हर चीज़ में मार्केटिंग का इन्वॉल्वमेंट है। अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर को कुछ प्रोड्यूस करना है तो ही हैज़ टू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केटिंग पीपल एज टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर्स को क्या चाहिए जो वो प्रोडक्ट में डाले या जिस तरह का वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। सो दैट इज़ वाई मार्केटिंग इज फाउंड इन एवरी स्फेयर ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, एंड विदाउट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन all other functions cannot function properly. In the similar vein, HR manager has to appoint people who have the sufficient expertise to produce the type of product the consumers are demanding. The marketing people will give the information about the type of the product required, and HR has to see that the necessary expertise is there in the people who are appointed to produce that product. So इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के हर डिसीजन के अंदर मार्केटिंग नज़र आता है। सोशली परवेसिव फंक्शन। मार्केटिंग की विजिबिलिटी सोसाइटी में भी काफ़ी दिखती है, बिकॉज यही एक फंक्शन है विच इज़ टोटली इंटरफेस विद द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के आमने सामने रहता है। बाकी सब फंक्शंस बैक एंड में ऑपरेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ऑपरेट करते हैं। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आके कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। ये मार्केटिंग ही है जिसके थ्रू कस्टमर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, एंड इट इज़ मार्केटिंग ओनली विच द कंज्यूमर ट्रस्ट। सो सोसाइटी के अंदर और सोशली ऑल्सो मार्केटिंग इज फाउंड everywhere in the form of advertising and communication. Operates within an environment. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट एक एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है, और क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही मार्केटिंग है तो मार्केटिंग को भी एक एनवायरनमेंट ने घेर रखा है। It can be internal environment, it is internal environment as well as external environment. So all this internal and external environment, they impact marketing to a large extent. So जब एक मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेट करती है तो बहुत सारा इम्पैक्ट मार्केटिंग पे आता है और मार्केटिंग का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे भी जाता है। इसका डिटेल हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट में स्टडी करेंगे। मार्केटिंग इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस के बारे में बात करें तो साइंस मीन्स अ बॉडी ऑफ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज इन विच कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स आर very well laid down, and they are based on observations and research. So market research, market analytics, operations research, all these are the parts of marketing which are based on science. But marketing also has an area where art is applied. Art is basically application of knowledge, and a lot of creativity is involved in when we talk about art. So if we see advertising and market segmentation, all these areas, they are related to art. So that is why marketing is considered to be both an art as well as a science. Now, talking about the importance. How important is marketing? Well, in the starting only, I told you that this is the only function which generates revenue.
सो शुरू में ही मैंने आपसे बताया था कि रेवेन्यू जनरेशन यही एक फंक्शन है ऑफ ऑल द अदर फंक्शंस. दिस इज द ओनली फंक्शन which does revenue generation, and revenue generation is very important. Sales is very important. So till the sales are made, rest all the activities have no importance. So that is why it is considered to be a very very important function of the organization. It is also central to all business activities. This also has been talked before also, कि सारी बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर मार्केटिंग से इंफॉर्मेशन ड्रॉ की जाती है. और बहुत बार मार्केटिंग भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करता है फॉर मेकिंग और फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइज्ड डिसीजंस, राइट. सो मार्केटिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता, बट मार्केटिंग बीइंग द सेंटर ऑफ इट, दैट मीन्स all information required is taken from the marketing people. If production manager को कोई information चाहिए regarding what type of product to be produced, only sales people or marketing people will be able to help. Finance will also depend on the sales forecasts, right? And similarly, HR also wants to appoint the people who are capable of handling what is required by the consumers. So that is why it is central to all the business activities. Then it is very important to the consumers, because I've already told you that the customers are are the basis of they are the center of every business activity. So customers, they get wide knowledge, they understand the patterns of consumption. They are, because since lot of information is given by the advertisers, is given by the marketing campaigns, the customer becomes very well equipped with the information around, and they can understand the patterns of consumption, and accordingly they become much more informed in their choices. The marketing also satisfies the needs and desires. Since marketing is focused on knowing what the customer wants, since marketing does a lot of research related to its customers. सो व्हाट हैपेंस, क्योंकि मार्केटिंग कस्टमर्स के बारे में काफ़ी जानने की कोशिश करता है और उसके बाद ही प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं मार्केटर्स. सो उससे क्या होता है कि कस्टमर्स के नीड्स एंड डिज़ायर्स बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो जाते हैं, बिकॉज कस्टमर्स आर गेटिंग सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स. कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम है वो इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है. सो व्हाट दे रिसर्च इज that what the problem the customer is facing, and if they produce a product to solve their problem, then the solution is given to the customer, and in this way the customers feel very happy because their needs and desires जो हैं वो उनके satisfy हो गए. It also helps in the raising the standard of living, because when it is an marketing is an economic activity. So in that sense, when the customers when there's healthy competition, and when the customers are aware of so many choices, they can make an informed choice, and they can buy the product which is least costly. So otherwise also it's an economic activity which automatically generates income, and then the standard of living also raises. So next is there's the customers can access the products globally. Now, because of internet marketing and online marketing, uh, the customers have become very very everything can be customers can get the products globally, and they have access to every kind of information which is available on the internet, internationally as well as nationally. So that is why they can buy products from global markets as well as from the domestic markets. So which also gives rise to a lot of which also gives rise to a lot of healthy competition. Now next is bridges the gap between production and consumption. What happens is, marketing, if it is done very efficiently, and I've told you that the main function of the marketing is also to bring the product from the place of production to the consumption, so that the consumer can very easily access the product. मार्केटिंग का एक काम है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन का गैप कम करे. अगर मार्केटिंग बड़ी एफिशिएंटली की जाती है, अगर उसके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इफ़ेक्टिव हैं, तो इस तरह से प्रोडक्श और जो प्रोडक्ट है वो बड़ी इफ़ेक्टिवली कंजम्पशन सेंटर तक पहुंच जाता है या कंज्यूमर तक पहुंच जाता है, तो द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज़ रिड्यूस्ड.
सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग ओनली. सो मार्केटिंग क्या करता है कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक प्रोडक्ट लाने, बहुत एफिशिएंटली प्रोडक्ट लाने की कोशिश करता है, ताकि कंज्यूमर को इजी एक्सेस हो, कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को इजीली खरीद पाए. सो ये गैप जो एग्जिस्ट करता है प्रोडक्शन सेंटर और कंजम्पशन सेंटर में, ये मार्केटिंग रिड्यूस करता है. It also creates gainful employment opportunity. Since marketing involves lots and lots of activities, which include transportation, storage, and then you can there are many advertising is there. There are a lot many activities which are involved in marketing, and in these activities there is a scope of employment generation. So lot of employment are is generated because of marketing as an economic activity. In the similar tone, when it is an economic activity and it generates gainful employment opportunities for people, obviously it will also lead to the rise in the national income. So एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से नेशनल इनकम में राइज होने के चांसेस भी हैं. लास्ट इज स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल. क्योंकि हमने बात की प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी ग्लोबली है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ग्लोबल है, कंजम्पशन कंज्यूमर्स को सारी इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के थ्रू मिल जाती है. तो उससे क्या होता है, आपकी कंपटीशन जो है वो कॉम्पिटिटर्स जो है वो, देयर इज अ हेल्दी कंपटीशन विच परसिस्ट in the market, and that leads to stability in the price levels. Because of that competition, because of the awareness, because of the information spread, this price levels tend to stabilize. Okay, so next we talk about the scope of marketing. Scope of marketing is what all can be marketed. In this we'll be discussing कि क्या क्या चीज़ें मार्केटिंग के स्कोप में आती हैं, मार्केटिंग किस किस की हो सकती है. Scope of marketing includes goods. This is very very and this is a known fact कि goods are marketed, तो उसको हम goods marketing बोलते हैं. इन द सिमिलर वेन सर्विसेज भी मार्केट होते हैं. सो अभी तक हमें ये आइडिया रहता था कि गुड्स और सर्विसेज ही मार्केट की जाती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आइडियाज, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, पर्सन एंड प्लेसेस कैन ऑल्सो बी मार्केटेड. So this forms the scope of marketing. So goods, when the goods are marketed, it is known as goods marketing. When services are marketed, it's known as services marketing. When ideas are marketed, it is known as idea marketing or social marketing. अब ideas, how the ideas can be marketed, ideas को कैसे market किया जा सकता है. ideas का मतलब है thoughts, opinions, philosophies and intellectual concepts. जब हम इनको market करते हैं तो वो idea marketing में आता है. जनरली स्पीकिंग आइडिया मार्केटिंग को सोशल मार्केटिंग से लिया जाता है, जहां एक आइडिया फ्लोट करते हैं जिससे कि आप बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं किसी का, राइट. सो वो सोशल मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा आता है, वेर इन आप कोई माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डोंट ड्रिंक विद ड्राइविंग. सो ये आइडिया अगर आप स्प्रेड करना चाहते हैं तो वो एक सोशल मार्केटिंग के ज़रिए किया जा सकता है. सो आइडिया, व्हेन एन आइडिया इज floated in the through a campaign. For example, pulse polio vaccination campaign was there. So the idea was to make India polio free. So उसकी पूरी एक campaign की गई और वो idea एडवर्टाइज किया गया. एंड जनरली इट इज़ द सोशल मार्केटर्स और द सोशल मार्केटिंग गवर्नमेंट विच इज़ जनरली डूइंग ऑल दिस आइडिया मार्केटिंग. So we'll be discussing about idea marketing in detail when we talk about social marketing in the subsequent lectures. Now coming on to the events. Event marketing क्या है कि जब एक इवेंट को मार्केट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके आईपीएल मैचेस, आपके ट्रेड शोज, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस, थिएटर परफॉर्मेंसेस, राइट. सो ऐसे इवेंट्स, आपके फुटबॉल मैचेस. ओके, सो व्हेन दीज काइंड ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस, जब उनकी मार्केटिंग की जाती है, केवल उन्हीं की मार्केट की जाती है, आईपीएल को लेके बात की जाती है, इवेंट को लेके बात की जाती है, तो हम उसको कहते हैं मार्केटिंग ऑफ इवेंट्स या इवेंट मार्केटिंग. देन नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस मार्केटिंग. व्हेन एन एक्सपीरियंस इज सोल्ड, जब एक एक्सपीरियंस सेल किया जाता है उसको हम एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग में लेते हैं. दिस में इंक्लूड जॉय राइड्स इन अम्यूजमेंट पार्क्स, थीम रेस्टोरेंट्स, कोई भी एक्सपीरियंस, चाहे वो आप
एक थिएटर एक्सपीरियंस मान लीजिए, या एक कोई एम्बियंस क्रिएट किया जाता है किसी जगह पे। सो उस एक्सपीरियंस को, कहीं आप जॉय राइड के लिए जाते हैं, कहीं आप फन पार्क्स में जाते हैं, या कहीं आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, या कहीं आप थिएटर में किसी कॉन्सर्ट में कुछ सुनने जाते हैं, तो उसको एक्सपीरियंस मार्केटिंग में लिया जाता है। सो व्हेन एक्सपीरियंस काइंड ऑफ थिंग इज मार्केटेड, देन इट इज एक्सपीरियंस मार्केटिंग. When that event is marketing, then it is event marketing. So there's a little difference between event and experiences marketing. Then organizations also market themselves, इन द सेंस कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को मार्केट करती है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी हॉस्पिटल और एक्स ए बी सी ट्यूटोरियल्स, सो इस तरह से जब कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद को प्रमोट करती है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में लेते हैं, बिकॉज दैट टाइम वो अपने प्रोडक्ट को नहीं, बल्कि अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को फुली मार्केट करने की कोशिश करती है, एंड दैट टाइप ऑफ मार्केटिंग वुड कम अंडर ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग. जब पर्सन्स अपने आप को प्रमोट करते हैं, या अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं, अपने बारे में बताने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम पर्सन मार्केटिंग में लेते हैं, और इसको हम सेलिब्रिटी मार्केटिंग भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलर सेलिब्रिटीज लाइक क्रिकेटर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, and nowadays influencers, now you have ott platform actors. So all these people, when they publicize about themselves, when they advertise about themselves, when they do communication about themselves or promote themselves, that is known as personal marketing, person's marketing. Coming on to the places, place marketing is when the places are promoted through by marketing strategies. For example, promoting of cities, states, nations, for attracting tourisms, or any manufacturing unit attracting some tourism. So all these would come under place marketing, right? So this is all what you need to understand in the scope of marketing. And thank you so much for listening to me carefully. And goodbye till I come up with another video of mine. Happy learning and stay happy. Thank you.